नमस्कारम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5th फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री बीएससी टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम हेडिंग वाइज एमसीक्यूज करेंगे, तो आप सिलेबस देख लीजिए अपना। अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कर्व्ड एरो नोटेशन एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, in curved arrow notation, what does a double-headed arrow represent? The movement of a single electron, the movement of a pair of electrons, the resonance between two structures, the equilibrium between two species. And the answer is option number B, the movement of a pair of electrons. इसका explanation भी हम साथ साथ देखेंगे। A double-headed arrow in organic chemistry signifies the movement of an electron pair from a donor to an acceptor. ठीक है। Question number second, which of the following correctly represent the movement of electrons in a nucleophilic attack? A curved arrow starting from the nucleophile to the electrophile, a curved arrow starting from the electrophile to the nucleophile, a straight line between the nucleophile and the electrophile, two curved arrows, one from the nucleophile to the electrophile and one from the electrophile to the nucleophile. And the answer is option number A, a curved arrow starting from the nucleophile to the electrophile. Explanation: in a nucleophilic attack, the nucleophile donates a pair of electrons to the electrophile. Hence, the arrow starts from the nucleophile and points to the electrophile. Next question. Next heading, homolytic and heterolytic bond fusion. In homolytic bond fusion, how are the electrons distributed between two atoms? Both electrons go to one atom. Each atom gets one electron. Electrons are not distributed and remain in the bond. Electrons are transferred to a third atom, and the answer is option number B. Each atom gets one electron. Explanation: homolytic bond fusion results in the formation of two radicals, each having one of the electron from the bond. Heterolytic bond fusion typically leads to the formation of two radicals, a cation and an anion, two cations, two anions, and the answer is a cation and an anion. Explanation क्या है इसका? Heterolytic bond fusion occurs when both electrons from the bond go to one atom, creating a positively charged cation and a negatively charged anion. आई होप आपको ये समझ आ रहा है। एक्सप्लेनेशन से आप और अच्छे से समझ पा रहे होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, स्पीशीज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीशीज दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। एंड द आंसर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. Explanation: electrophiles are electron deficient species that seek electrons to attain stability. Next, which of the following is an example of a nucleophile? बताइए आप। ऑप्शन नंबर सी देखो, Cl नेगेटिव। ठीक है। Nucleophiles are electron rich species and often have lone pairs or negative charges like Cl negative. Next heading is types of organic reactions. Which type of reaction involves the addition of a molecule to a double bond? Substitution, addition, elimination, rearrangement. And the answer is of course addition reaction. So addition reaction involves the addition of atoms or group of atoms to a double or triple bond, converting them to single bonds. हाइड्रोजन एटम हम कार्बन में ऐड करते हैं रिएक्शंस के दौरान, ताकि जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हम उसको हाइड्रोजन देंगे। ठीक है। फिर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर हम उसे और हाइड्रोजन देंगे, देन वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। इस तरह का, सॉरी ये थोड़ा ब्राइटनेस का इशू है फ़ोन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एन एलिमिनेशन रिएक्शन? formation of a new bond, breaking a single bond and formation of a double bond, replacement of one group by another,
shifting of a hydrogen atom, and the answer is breaking a single bond and formation of a double bond. Explanation क्या है इसका? Elimination reaction involves the removal of atom or groups from a molecule resulting in the formation of a double or triple bond. Next topic is energy considerations. The difference in the energy between reactants and products in a reaction is called activation energy, heat of reaction, transition state energy, bond dissociation energy, and the answer is heat of reaction. तो heat of reaction क्या है? एंथैल्पी चेंज भी हम इसे कहते हैं. ये डिफरेंस है. The heat of reaction is a difference in energy between the reactants and products. Next, the energy required to initiate a reaction by breaking bonds in the reactants is called activation energy. है ना, मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है. Activation energy is the minimum energy required to start a chemical reaction by breaking the necessary bonds in the reactants. Next heading is reactive intermediates. Which of the following intermediates has a positively charged carbon atom? Carbanion, carbocation, free radical, carbene. And the answer is carbocation. A carbocation is an intermediate with a positively charged carbon atom, typically formed in heterolytic bond fusion. What type of reactive intermediates is characterized by having an unpaired electron? Carbocation, carbanion, free radical, carbene. Free radical. Free radicals are intermediates that contain an unpaired electron, making them highly reactive. ठीक है. Next question is which intermediate is typically formed during the elimination reactions? ठीक है, इन्वॉल्विंग हैलाइड, जिसमें हैलाइड इन्वॉल्व रहेगा. कार्बोकेटायन, कार्बनायन, अरीन, नाइट्रीन. तो इसमें कार्बोकेटायन आ जाएगा. कार्बोकेटायन आर ऑफन इंटरमीडिएट्स इन एलिमिनेशन रिएक्शंस वेयर अ हैलाइड लीव्स जनरेटिंग अ पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन. विच रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैज़ अ डाइवेलेंट कार्बन विद 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये एक स्पेशल केस है. इसका आंसर जो है कार्बीन. कार्बीन में एक्सप्लेनेशन देखो. कार्बीन हैव अ डाइवेलेंट कार्बन एटम विद 2 unshared electrons, making them neutral yet highly reactive intermediates. Please subscribe to my channel, like, share and comment. Thank you.